Hello students, I am your science teacher. Students, we will lesson 5th, separation of substances. Chapter 5, Separation of Substances. Most of the things around us like air, seawater, soil, rock, milk, and paint are mixtures. Seawater is a mixture of salts dissolved in water. Milk is a mixture of cream or butter and water. A mixture is a substance that contains two or more pure substances mixed together in varying proportions. The substances, components present in the mixture do not lose their identity. These components can usually be separated by simple physical methods. Milk or curd. बेटा हम अपने चारों साइड कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि मिक्सर के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल बताया एयर, सी, वाटर, सोयल। तो ये कैसे मिक्सर होती है, जैसे कि आपको बताया गया है सी के अंदर हमारे जो सोल्ट होता है उसका मिक्सर होता है, ठीक है। मिल्क होता है उसके अंदर, जो बटर होती है उसका मिक्सर होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है बेटा मिक्सर टाइप में हमें हमारे चारों ओर दिखाई देती है। तो एक मिक्सर जो होता है एक सब्सटेंसेस होता है जो कि टू और मोर पुअर सब्सटेंसेस के मिक्स से बनता है टुगेदर वेरिएंट प्रॉपर्टीज। उसके अंदर दोनों चीज़ों के जो दोनों सब्सटेंसेस के जो है वो गुण प्रॉपर्टीज पाई जाती है। Is churned to separate the butter from the water. Common salt that is used in our kitchen is prepared from seawater by separating salt from water. Let us study the need of separation of substances from their mixture. Need for separation of substances in a mixture. To remove undesirable substances. Tea is made by boiling tea leaves in water and then adding sugar and milk. After the tea has been made, used tea leaves are an undesirable component of the mixture. We separate it by using a filter called tea strainer. तो बेटा हमें सेपरेशन की ज़रूरत नीड्स क्यों होती है? तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि इनको जो हमें अवांछित जो चीज़ें होती है उसके अंदर जो हमें नहीं चाहिए होती है उनको अलग करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर टी बताया गया है कि जब हम टी बनाते हैं तो लास्ट के अंदर जो लीफ ऑफ टी होती है उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक जैसे यहाँ पर बताई गई उनके थ्रू जो है वो हमको उनको अलग करते हैं। Before eating a banana, we peel off its skin, undesirable component. To obtain useful components. Crude petroleum is a mixture of various components such as petrol, diesel, kerosene, and petroleum gas. We separate the petroleum mixture to obtain these useful components. Kerosene is used as a household fuel, whereas petrol and diesel are used as fuels in vehicles. To remove harmful substances. We buy wheat, rice and दूसरा हमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं किसी चीज़ के साथ मिक्सर उनको भी अलग करने के लिए सेपरेशन की जो है वो नीड होती है। pulses from the market. These food grains usually contain small pieces of stones and insects. जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम मार्केट से राइस लेते हैं या जो है दाल लेते हैं तो उसके अंदर कुछ हमें एक्स्ट्रा जो है सब्सटेंसेस मिले होते हैं हार्मफुल, उनको अलग करना पड़ता है। These pieces of stones and insects are harmful to us. So, we separate them from wheat, rice and pulses before using them. Methods of separation. When we want to separate a component of a mixture, we should first find out some of its properties that would be different from the remaining components of the mixture. Let us study the simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. तो बेटा हम जो सेपरेशन के लिए क्या क्या मेथड जो है यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ जो है एक्टिविटी जो है हम कह सकते हैं उसके लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। Separation of insoluble solids from a mixture. Hand picking. The grains and pulses that we buy from the market may contain undesirable components like small stones. These components look very different from the food grains. They are of different sizes and colors. So, these can be spotted easily.
Such undesirable components can be removed by hand picking. Hand picking means to take out by hand. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया कि हैंड पिकिंग, कुछ सब्सटेंसेस जो हम मार्केट से लेते हैं उनके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि अलग करते हैं हम हाथ से उठाकर उनको जो है अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग मीन्स इज द टेक आउट बाय हैंड, यानी कि हाथ के द्वारा उन चीज़ों को अलग करना। It is a convenient method of separation only when the size, shape, or color of the unwanted substance is different from that of the useful one. The quantity of the mixture is small and the unwanted substance is present in smaller quantities. इस टेक्निक का यूज़ हम तभी करते हैं जबकि जो हमारे अवांछित जो उसके अंदर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं वे क्वांटिटी में कम हो, उनके साइज और कलर जो है जो मेन सब्सटेंसेस है उनसे अलग हो और वो हमें इजीली दिखाई दे। Threshing. Cereals like wheat and rice are a source of food for us. After harvesting these food crops, the grains need to be separated from the rest of the plant. नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं व्हीट एंड राइस, उनके हार्वेस्टिंग के बाद काटने के बाद जो है उनको उनके हस्क से जो है अलग किया जाता है। ठीक है, तो जो अलग करने की जो प्रोसेस होती है ये थ्रेसिंग होती है। This is done by the process of threshing. The process of separating the grains from the rest of the plant is called threshing. It is done in the following ways. In manual threshing, the farmer holds a pile of crop in his hand and hits it against a rock or any hard surface. During the तो थ्रेसिंग की टेक्निक जो है स्टार्टिंग में है जो मैनुअल थ्रेसिंग होती है, इसके अंदर क्या करते हैं फार्मर जो होते हैं वो क्रॉप्स को हाथ में पकड़कर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर देकर ऊपर से मारते हैं जिससे कि जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, स्टॉक जो है अलग रह जाता है। This process, the grains separate from the plant. Threshing can be done by a machine called thresher. This machine is used for threshing large quantities. Threshing can also be done by combine harvester. Winnowing. After threshing, a farmer gets a mixture of grains, wheat, rice, and husk. Now, before grains can be used, husk, undesirable component, has to be removed from them. This is done by using the property that grains are heavier than husk. नेक्स्ट है विनोइंग। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर मिक्स होता है ग्रेन्स और उनका हस्क। तो इनकी एक तरह से कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी जो होती है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं जबकि हस्क जो होते हैं वो वेट में लाइट होते हैं। The lighter husk particles are separated from the heavier grains by the method of winnowing. In this process, the farmer takes a mixture of wheat grains and husk in a winnowing basket. He stands at a higher platform from the ground and allows the mixture to fall down from a height by shaking the winnowing basket continuously. The wheat grains, being heavy, fall down vertically on the ground and form a heap. The husk particles, being lighter, are carried away by the wind, so the husk forms a separate heap a small distance away from the heap of wheat grains. तो इस प्रोसेस में क्या होता है फार्मर्स जो होते हैं ग्रेन और हस्क का जो मिक्सर होता है उसको एक अपना जो यंत्र बर्तन होता है उसके अंदर ले लेते हैं और एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं, फिर उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो जैसे हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं नीचे चले जाते हैं और हस्क जो होता है वो एयर के अंदर जो ऊपर उड़ जाता है और दोनों चीज़ें जो है सेपरेट हो जाती है। In this way, husk gets separated from the wheat grains. The method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. Sieving. When the components of a mixture have particles of different sizes, a sieve can be used to separate them. A sieve is a shallow vessel that has small holes at its bottom. The size of the holes in the sieve depend on the size of the components to be separated. The method of separating the components of a mixture that are of different sizes by using a sieve is
नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सब्सटेंसेज होते हैं वो साइज में अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका साइज अलग होता है, तो हम इस प्रोसेस के द्वारा जो है इनको अलग करते हैं। Called sieving. Filtration. We have seen earlier that to separate used tea leaves from tea, we pour the prepared tea through the tea strainer. The tea strainer has a wire mesh in it that acts as a filter. The liquid tea passes through the small holes of the tea strainer and collects in the cup below. The used tea leaves, being bigger in size, do not pass through the tea strainer and are left on the tea strainer. This process is called filtration. The process of separating insoluble substances from a liquid using a filter is called filtration. The tea strainer cannot be used to separate mud from water. The particles of mud are too small and will pass through the holes along with water. For this, we need a fine filter such as a filter paper. A filter paper is a piece of special paper that has millions of tiny holes in it. The holes of a filter paper are so small that they cannot be seen with the naked eyes, but can be seen only through a microscope. Separation of soluble solids from a mixture. Evaporation. This method is used to obtain a solid substance that has dissolved in a liquid. Common salt dissolved in water can be separated by the process of evaporation. The process is based on the fact that liquids vaporize easily on heating, whereas solids do not. The process of changing of a liquid into its vapor by heating is called evaporation. Seawater contains a lot of salts. The process of evaporation is used on a large scale to obtain salts from the seawater. Seawater is trapped in shallow ponds called lagoons and allowed to stand there. The heat of the sun gradually evaporates the water completely in the shallow ponds, leaving behind the solid salts. This mixture of salts is further purified to obtain common salt. नेक्स्ट है इवेपोरेशंस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस मेथड के अंदर की जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं उनको हम हीटिंग गर्म करके जो है अलग अलग करते हैं, ये इवेपोरेशंस कहलाता है। इस प्रोसेस का यूजेज जो है समुद्र के अंदर नमक बनाने में किया जाता है। Separation of mixtures by using more than one method. A mixture that has only two components can be separated by a single method. On the other hand, a mixture that has more than two components can be separated into individual components by a combination of methods of separation. These methods are applied one after another. Let us consider some examples. Separation of iron filings, ammonium chloride and sand mixture. To separate a mixture of iron filings, chalk powder and common salt into individual components. Solubility. Different substances dissolve to different extents in water at a given temperature. For example, 204 grams of sugar can be made to dissolve in 100 grams of water at room temperature, whereas only 36 grams of salt can be made to dissolve in 100 grams of water at room temperature. In other words, sugar dissolves to a greater extent than common salt.
The extent of dissolution of any substance is described in terms of solubility. The maximum amount of a substance that can be dissolved in 100 grams of water at a given temperature is called its solubility in water. Solubility of some common substances at 20 degrees Celsius is given below. Substance, solubility in water. Sugar, 204 grams. Common salt, 36 grams. Potassium nitrate, 32 grams. Copper sulfate, 21 grams. Activity 9. To prepare a saturated solution of sugar at room temperature and observe the effect of temperature on the solubility of the sugar in water. Things needed: sugar, beaker, spoon, burner. Method: take 100 grams of water in a beaker. Add a small quantity of sugar into the water. Sugar dissolves in water on stirring with a spoon. Keep on dissolving more and more sugar in the water with constant stirring until no more sugar dissolves. You find that some sugar is left undissolved at the bottom of the beaker. You have obtained a saturated solution of sugar. Now, heat the beaker containing the saturated sugar solution. What do you observe? The undissolved sugar at the bottom of the beaker gets dissolved. This shows that at higher temperature, more sugar gets dissolved. Now, let this hot solution cool. What do you observe? The sugar settles at the bottom of the beaker again. This shows that at low temperature, less sugar dissolves in water. Conclusion: heating of a saturated solution of any substance increases the solubility of the substance. If the saturated solution of a substance is cooled to a lower temperature, the solubility of the substance decreases and some of the dissolved substance separates in the form of crystals. So students, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो है एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोगों को इसको नोटबुक में राइट करना है। स्टूडेंट स्टार्ट कीजिए। Chapter 5. उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं बेटा, इनको राइट करना है आपको।